Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Okay, welcome to the class of microwave engineering. So today is our fourth lecture of this course. So just to recapture what we did last time. So we derive a very important equation of EMF, and that is wave equation. And after deriving wave equation, we also discuss its solution. Okay, and not only we look at the mathematical form of the solution, we also understood the conceptual meaning of the solution. So, based on the solution, we found that uh, electromagnetic wave consisting of electric field and magnetic field, it travels in a particular mode, and that mode was given the name of TEM mode, which stands for transverse electromagnetic mode, in which electric field vector, magnetic field vector, and direction of propagation vector are mutually perpendicular. But what we ignored last time was we consider a lossless situation. So if you remember, when I was deriving wave equation, I consider this particular assumption that we have a source free region. Source free region. Which means that we don't have any charges. So as a result, we don't have any conductivity. So last time we assumed that conductivity was equal to 0. And based on that, we derive wave equation, which was in this form: del square E plus k square E equal to 0, where k was defined to be equal to omega times mu epsilon under the root. This was one of the equation, that is in terms of electric field. This equation is valid for this case, which we also consider as lossless case. Because if you remember, we related the losses to the conductivity of the medium. So if conductivity is 0, it means we are talking about a lossless case. So what I'm actually trying to recapture is that in our last lecture, when I was talking about wave equation, that wave equation was for lossless case. So the case that we have already covered is lossless, when medium is lossless. So we have this equation, and what was the solution? Last time we found that this equation can have a solution. This is the phasor solution of electric field. And using this solution, we also found that magnetic field solution will be like this.
where this term in the denominator was given the name of intrinsic impedance of the medium. Now, today we are going to find out that if our medium is lossy, it means conductivity will not be equal to zero. So then what will happen to wave equation and what will happen to the solution? Okay. So today we are going to talk about wave equation in a general lossy medium. So first of all, we need to write down the Maxwell equation. What will happen to the Maxwell equation if the medium is lossy? So the two Maxwell equations that we used for wave equations are the Maxwell's curle equations So one is the curl of E, which will be equal to minus j omega UH. And the second curl equation is curl of H is equal to j omega epsilon E. And now because we are dealing with a lossy media, so conductivity is not equal to zero. As a result, we will also have another term in this Maxwell equation, and that is the conduction current density, which is represented by J. And we all know that the conduction current density J is equal to sigma times E. So this J will be equal to sigma times. This is how we can write down Maxwell curl equation in any general lossy medium. Now, if you remember in our last lecture, when I was deriving wave equation, I was not including this term. So in the previous lecture, we considered this term to be equal to zero. And why we took it to be equal to zero? Because in that case, sigma was zero. So if sigma is zero, J, which is equal to sigma times E, it means that J must be equal to zero. But now we cannot take J equal to zero. J has to be equal to sigma times. Now, looking at these two equations in a similar manner, we will say that there are two unknowns: electric field, magnetic field, magnetic field, and electric. So we have two equations with two unknowns. So what we will do, we will convert or transform these two equations into a single equation, and that single equation is what we called as wave equation. So we will use the same procedure that we used last time, is to convert these two equations into a single equation that either consists of electric field vector or it consists of only magnetic field vector. So wave equation. So the procedure is same. Let's say we want to derive a wave equation in terms of electric field vector. So I will use equation number one. Then the first step, I will use the curl operation on both sides. So I will say take curl on both sides, equation number one.
So we end up with curl of E and minus j omega mu curl of H. So in place of curl of H, you can use equation 2. So curl of H is equal to this thing. So we end up with curl of E on the left hand side and minus j omega mu. And in place of curl of H, I will write j omega epsilon E plus sigma E. So we can multiply this term with this one and then with this one. So from the first term, you will get minus j square, and j square is minus 1. So we get plus. So plus 1 omega square mu epsilon E, and then minus j omega mu epsilon E. Okay. So on the right hand side, what you will get omega square mu epsilon E and minus j omega mu sigma minus j omega mu sigma times E. Okay, and on the left hand side, this thing again we will apply the vector identity. सर G. सर इक्वेशन 2 में जे भी है. इक्वेशन 2 में कहाँ पे? वो खत्म हो जाएगा. करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं सर. इसकी बात कर रहे हैं आप? यस सर. ये मैंने लिखा हुआ है ना? ये इसकी इक्वल है ना सर, कंडक्शन. ये मैं लिखा हुआ ना, ये जे है ना? ओके सर. ओके. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड जो कि वेक्टर आइडेंटिटी है, जिसको हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, कि अगर आपके पास एक वेक्टर हो और उसका 2 दफ़ा कर्ल ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये ऑपरेशन इसके बराबर है कि आप पहले इस वेक्टर का ग्रेडियंट लें, डाइवर्जेंस लें, और डाइवर्जेंस के बाद जो क्वांटिटी आपके पास आएगी उसका फिर आप ग्रेडियंट ले लें, और इससे माइनस डेल स्क्वायर ई जो है वो माइनस कर लें. So this operation, curl of any vector is equal to this. तो ये वेक्टर आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं. ठीक हो गया. और अगेन इसमें जो आपके पास ये टर्म है, ये डेल डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है ये 0 के बराबर होगा, बिकॉज हमने कौन सा मीडियम अज्यूम किया है? हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास सोर्स फ्री मीडियम है. तो ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस डेल स्क्वायर ई आ जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस डेल स्क्वायर. So let me bring this term on the other side. So ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी डेल स्क्वायर ई प्लस मेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई minus j omega mu sigma times E equal to 0. So now you can see कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ चुकी है जिसमें सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नजर आ रहा है. So मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हमने इस इक्वेशन से निकाल दिया. So this is our wave equation, but before I talk about this equation, इस equation को हम थोड़ा सा modify कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको previous जो हमारा केस था lossless केस, उसके साथ इसको हम compare कर सकें. So for that, what I will do is I will take this factor as common. तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इस टर्म को कॉमन ले लेता हूँ. ठीक हो गया. सो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर ई प्लस
ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और इसके साथ जो ई है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. So what we will get in the brackets is, of course, ये पूरी टर्म ने कॉमन ले ली है तो 1 आ गया. Then we have minus, then ये आपके पास j, और ये आपने जो कॉमन लिया है तो इसमें ऑफ कोर्स एक आपके पास सिग्मा टर्म रह जाएगी. ठीक हो गया. और डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ एप्सिलॉन करूं, ठीक, तो यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस. ठीक है. सो यू कैन चेक इस टर्म को, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस. नाउ ये जो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, this is our wave equation. And just to make sure कि इसको हम इस लास्ट लेक्चर में जो हमने सोर्स फ्री रीजन और लॉसलेस केस किया था, इस केस के साथ मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स के स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन यू रिमेम्बर कि के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये मैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूँ कि जब हमने लॉसलेस केस अज्यूम किया था, लॉसलेस केस, हमारे पास इक्वेशन इस तरह की थी, डेल स्क्वायर ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई इक्वल टू 0. और अब जो ये इक्वेशन आपके पास आई है, ये कौन सा केस है? ये आपके पास लॉसी केस है. So now you can compare these two equations side by side and you can see कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो टर्म आ गई है वो आपको नजर आ रहा है कि ये टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुकी है. अगर इस टर्म को मैं हटा दूं तो एक्चुअली ये इक्वेशन जो लॉसी केस है वो ये रह जाएगी. ठीक है. और वो कंपैरिजन बड़ा आसान है आपके लिए कि अगर मैं इसको देखूं कि ये मीडियम, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये लॉसी केस के लिए है, और लॉसेस का ताल्लुक किस चीज के साथ है? कंडक्टिविटी के साथ. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है. कैन यू सी दैट? सो अगर मैं कहूँ कि मेरा मीडियम जो है वो लॉसी नहीं है बल्कि लॉसलेस मीडियम है, तो जब लॉसलेस मीडियम होगा तो ऑफ कोर्स सिग्मा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. जब सिग्मा 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी एंड यू विल गेट दिस थिंग. तो यू कैन क्लियरली सी के लॉसी जो हमारा केस है, जो कि जनरल केस है, अगर हमने इससे लॉसलेस केस निकालना हो तो इजीली हम सिग्मा को 0 पुट कर लेंगे और हमारे पास एग्जैक्टली इस तरह की क्वेश्चन आ जाएगी. नाउ आई वांट टू जनरलाइज ये जो यहाँ पे पैरामीटर है, तो मैं एक डिफरेंट कलर देता हूँ. लेट्स, सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं यहाँ पे ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, दिस वन, ये जो आपके पास एक फैक्टर आ चुका है, इसको हम एक डिफरेंट पैरामीटर से रिप्लेस करेंगे. जिस तरह हमने क्या किया था, मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ. लॉसलेस केस में मैंने क्या किया था कि जो वेव इक्वेशन आई थी, ये जो फैक्टर था इसको मैंने के से रिप्रेजेंट कर. अब ये जो फैक्टर आ चुका है हमारे पास, इसको हम रिलेट करेंगे एक पैरामीटर से जिसको हम कहेंगे गैमा. गैमा, और गैमा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा. यू कैन क्लियरली सी कि जिस एक्सप्रेशन को मैं गैमा से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ उसमें आपको नजर आ रहा है कि रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट. तो इस एक्सप्रेशन के रियल पार्ट को हम फिर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं
और इस एक्सप्रेशन का जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो मैंने गैमा इंट्रोड्यूस किया है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोपगेशन कांस्टेंट। कॉम्प्लेक्स प्रोपगेशन कांस्टेंट। और ये किसके बराबर हम लेंगे? जिस तरह लॉसलेस केस में मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि k को मैंने इक्वल ले लिया था ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर द रूट। ठीक हो गया। अब गैमा किसके बराबर होगा? सो हम क्या कहेंगे कि लेट गैमा इज इक्वल टू j ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर द रूट into 1 minus j sigma divided by omega epsilon under the root. And because this is also gamma है जिसका कुछ ना कुछ रियल पार्ट भी होगा, कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट। सो व्हाट वी विल डू इज कि अल्फा किसके बराबर है, बीटा किसके बराबर है, जब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि अल्फा कितना है, बीटा कितना। नाउ वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अल्फा और बीटा जो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट इंट्रोड्यूस किए हैं इस प्रोपगेशन कांस्टेंट के, इसको भी हम एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी असाइन करेंगे कि प्रोपगेशन कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स प्रोपगेशन कांस्टेंट का जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट, इस रियल पार्ट जिसको मैंने अल्फा से डिनोट किया हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, ये हमारे मीडियम का एटेन्यूएशन कांस्टेंट। और प्रोपगेशन कांस्टेंट का जो इमेजिनरी पार्ट होगा, वी विल कॉल इट कि ये हमारे मीडियम का फेस कांस्टेंट है। Now, it's obvious from the terminology as well कि अल्फा जिसका जिसका रियल पार्ट प्रोपगेशन कांस्टेंट का रियल पार्ट है, ये हमें बताएगा कि हमारा मीडियम जब वेव उससे पास होगी तो कितना उसको एटेन्यूएट करेगा। सो इसके हमें एटेन्यूएशन का पता चलेगा। एटेन्यूएशन अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि हमारा मीडियम जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसी मीडियम है, जिस वजह से वेव में एटेन्यूएशन भी बहुत ज़्यादा आएगी। जो बीटा है जिसको हम फेस कांस्टेंट कह रहे हैं, इसका ताल्लुक है कि हमारा जो भी सिग्नल जब मीडियम से पास होगा तो एज इट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम उसका फेस चेंज होगा, तो वो फेस किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमें पता चलेगा, फेस कांस्टेंट से पता चलेगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर आप इसको देखें, इसमें आपके पास है ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन है। ठीक है, तो अगर आप ये गैमा इसके बराबर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो आपको नजर आ रहा है कि इस इक्वेशन में आपको ये यही नजर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे ये कि प्लस साइन, जब इसको स्क्वायर लिया तो माइनस आ गया, तो हम यहाँ पे इसको माइनस को इससे प्लस से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ गैमा मैं इसको लिखना चाहता हूँ। सो ओमेगा स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर ई माइनस गैमा स्क्वायर ई इक्वल टू 0। सो ये जो माइनस है, इसको जब यहाँ पे हम माइनस से रिप्लेस करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके पास ये प्लस है। so, जिस तरह हमने इस इक्वेशन को इस तरह लिख दिया था, डेल स्क्वायर ई प्लस
k square E equal to 0 for a lossless case. For a lossy case, now हमारे पास equation की चुनी यहाँ पे minus gamma square. Now let's find out what is the relationship of this k. यहाँ पे जो मैं k जिसको कह रहा था, अब यहाँ पे तो मुझे k कहीं भी नजर नहीं आ रहा है. मैंने तो इसको गैमा का या गैमा का रियल पार्ट अल्फा है और इमेजिनरी पार्ट बीटा है. सो व्हाट इज दिस k? ये k को हम किस से रिलेट करेंगे? सो ये हम इजिली यहाँ पे अब कर लेंगे. ये आपके पास गैमा की वैल्यू है. ठीक हो गया. क्योंकि इसका ताल्लुक लॉसलेस केस के साथ है. सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो गैमा है इस पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मैं कहूँ कि मीडियम जो है वो लॉसलेस है. तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ कि फॉर लॉसलेस केस और फॉर लॉसलेस मीडियम वी नो कि हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. So what will happen to propagation constant? इसको मैं gamma से represent कर. What will happen is कि ये term आपके पास 0 हो जाएगी. So as a result gamma किसकी बराबर रह जाएगा? J omega mu epsilon under the. Now हमने मेंशन किया हुआ है कि gamma जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट अल्फा है, इमेजिनरी पार्ट बीटा है. लेकिन हमारे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट इसके बराबर है. तो इसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कितना होगा? इसका मतलब है कि अल्फा 0 के 0. बराबर 0 हो गया. और बीटा किसके बराबर हो गया? ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर द रूट हो गया. नाउ ये जो मैंने बीटा इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन अंडर द रूट है, ये ओमेगा इनटू म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट क्या चीज थी लॉसलेस केस में? Okay. इसको हम के K कह sir. रहे थे. के कह रहे थे. ठीक है. सो इट मीन्स के ये आपके पास के बराबर. सो नाउ यू नो कि यहाँ पे जिसको हम के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इसको आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज है? ये प्रोपगेशन कांस्टेंट का कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है. इसका मतलब है कि इसको हम क्या, हमें क्या कहना चाहिए? इसको फेस कांस्टेंट कहना चाहिए. ऑफ कोर्स ये हमारे मीडियम का प्रोपगेशन कांस्टेंट भी है, लेकिन क्योंकि प्रोपगेशन कांस्टेंट सिंपली जे बीटा के बराबर आ गया, तो बेसिकली हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट गैमा है. और क्योंकि वो सिंपली बीटा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये फेस कांस्टेंट भी है, प्रोपगेशन कांस्टेंट भी है. सो नाउ इफ यू अगेन लिसन टू माय लेक्चर 3, यू विल फाइंड आउट कि जब मैंने ये के को इंट्रोड्यूस किया था, इसको मैंने 3 नाम दिए थे. I call it propagation constant, I call it phase constant, as well as I call it wave number. तो ये आप चेक कर लें. ठीक है. So now you know the Yes. reason. Now you know the reason कि इसको मैं क्यों डिफरेंट नाम दे रहा था, क्योंकि ये एक्चुअली अब जो जनरल लॉसी केस हमारे पास आ गया, उसके बेस के ऊपर हमें पता चल गया कि एक्चुअली ये जो के है इसका ताल्लुक इमेजिनरी पार्ट ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट के साथ है, जिसको जनरली हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. सो अब आप कह सकते हैं कि अगर आपका जब भी आप एक ऐसी इक्वेशन लिख रहे हो जिसमें आप के लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपका मीडियम जो है वो क्या है? लॉसलेस. और जब भी आप अपनी इक्वेशन में गैमा यूज कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि आपका मीडियम जो है वो लॉसी. सो नाउ यू कैन सी कि ये जो वेव इक्वेशन हमने डेराइव की है, इसमें आपको गैमा नजर आ रहा है. तो ये वो इक्वेशन है जो हम लॉसी मीडियम में यूज करेंगे. So if you go back, this was our starting point, wave equation in a general lossy medium. So what is the final equation that we end up with? This is the equation that
we can use when we are dealing with wave equation in a lossy medium. अब ये equation मैंने in terms of E derive की है, but you know in a similar manner जब मैं लास्ट लेक्चर में किया था कि मैंने ये इक्वेशन भी डिराइव की थी और फिर मैंने कहा था कि आप मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज करके एक और इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं जिसमें एच, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इक्वेशन हो जिसमें एच, ठीक है। सो ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं एक ऐसी इक्वेशन में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एच होना चाहिए। तो अगेन सेम मेथड कि आप बजाय इक्वेशन 1 को यूज करने के आप इक्वेशन 2 से स्टार्ट लेंगे, कर्ल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और सिमिलर प्रोसीजर आप कर लेंगे। इट्स नॉट दैट डिफरेंट, दैट मच डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई विल से सिमिलरली we can derive another wave equation in terms of h, and that is equation इस तरह की होगी, del square h minus gamma square h equal to 0. So this is also wave equation. And again you should remember कि यहाँ पे gamma जो हम define कर रहे हैं ये इसके बराबर है j omega mu epsilon under the root into 1 minus j sigma omega mu epsilon under the root. Now let's move on to the solution. So जिस तरह हमने lossless equation जो निकाली थी वे इसका फिर हमने solution निकाला था under some assumptions, ठीक है। तो अब हम यही काम लॉसी मीडिया के लिए करेंगे कि अगर लॉसी मीडिया में हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना हो तो उस सोल्यूशन को हम कैसे फाइंड करेंगे और उस सोल्यूशन को क्या मीनिंग असाइन करेंगे, ठीक हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन की सोल्यूशन को डिस्कस करता हूँ, बट मैग्नेटिक फील्ड सोल्यूशन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जैक्टली इसी तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, अगेन ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, इट इज अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के बजाय पहले हम इसका एक सिंप्लीफाइड सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और सिंप्लीफाइड सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एक इसकी एक सिंपल केस ले लेते हैं, एंड वो ये हो सकता है कि हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसका सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। सो ई वाई और ई जेड को हम जीरो ले रहे हैं, ठीक हो गया। सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है और वो एक्स कंपोनेंट है। और दूसरी एजम्पशन हम ये करते हैं जो कि पहले भी हमने की थी कि ये कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है वो जीरो के बराबर है। इट मींस इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, which means it is not function of x and y, which means it is function of only z. Which means कि मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि जो ex है ये सिर्फ और सिर्फ z पे डिपेंड करता है। सो ये assumption हमने लॉसलेस केस के लिए, इससे हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और एक हम सिंपल सोल्यूशन के लिए कर लेते हैं। सो इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे इसको इस तरह लिखेंगे,
So because of the assumption, this thing is 0. So we are only left with this part. So ये हमारी equation. Now this is a second order ordinary differential equation because the unknown is a function of only single variable, and that is z. तो इसका solution हम easily find कर सकते हैं using any method you like. So इसका solution मैं लिख रहा हूँ कि इस equation का solution आपके पास क्या होगा. Again there will be some unknown arbitrary constant. पहले constant को मैं e plus कह देता हूँ और solution में आपके पास होगा e power minus gamma z. और जो दूसरा solution होगा उसमें जो unknown constant है उसको मैं e minus से represent कर लेता हूँ. Again it's up to you. इसको आप a कह सकते हैं, इसको b कह सकते हैं. So the notation doesn't matter, okay? Because हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं तो इस वजह से ई प्लस का और ई माइनस नोटेशन हम यूज करते हैं, बट यू कैन यूज एनी सिंबल यू लाइक. जो सेकंड सोल्यूशन होगा वो आपके पास ई प्लस गैमा से. सो दिस इज द सोल्यूशन of wave equation. One possible, of course, when you talk about solution of differential equation, so there are infinite number of solutions. इस वक्त जो हमने solution निकाला है वो एक स्पेशल केस के लिए निकाला है जिसको हमने इन assumptions, ये आप कह सकते हैं कि under these assumptions this is going to be the solution. Okay, now this is again phasor solution. Now what is the meaning of this solution? Okay. So let me discuss this in the next session.